हेलो फ्रेंड्स। बहुत कम टाइम बचा है अब जिपमैट के एग्जामिनेशन में। इट्स ऑलरेडी लाइक द मंथ ऑफ अप्रैल एंड वी आर a few days away from Jipmat 2025. Now the exam is will be conducted on 26th of April. That leaves us handful of days to prepare for this examination. अब अगर प्रिपरेशन की बात करें ना, प्रिपरेशन सबकी हो चुकी है. दिस इज व्हाट आई बिलीव द स्टूडेंट्स who will be actually getting the final admissions, उन सब स्टूडेंट्स की ऑलरेडी प्रिपरेशन हो चुकी होगी एंड दे मस्ट हैव एंटर्ड इनटू द फाइनल फेज. अब फाइनल फेज क्या है? सारे चैप्टर्स प्रिपेयर करने के बाद, सारे टॉपिक्स के लिए प्रैक्टिस करने के बाद अब एक चीज बचती है, रिवीजन. रिवीजन यूजिंग विच विल बी एबल टू इंप्रूव आवरसेल्फ. जो लास्ट में जो भी छोटे छोटे वीक एरियाज बचे हैं, राइट, जो भी लूप होल्स बचे हैं, उन सबको प्लग करना है. ये जो लास्ट के 10 या 15 दिन बचे हैं, एंड ये चीज कैसे हो सकती है? विद अ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ दीज लास्ट 15 डेज, राइट. सो फ्रेंड्स, इन दिस सेशन विल टॉक अबाउट हाउ वी कैन डू दिस थिंग फॉर लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन. कैसे कर सकते हैं, क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, किस तरीके से अपना एंटायर डे डिवाइड करना चाहिए, कितना टाइम लॉजिकल रीजनिंग पे देना चाहिए, कितना टाइम डेटा इंटरप्रिटेशन पे देना चाहिए, कितना टाइम अदर एरियाज, अदर सेक्शंस के लिए भी छोड़ना चाहिए, राइट. एंड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन व्हाट शुड बी आवर स्ट्रैटेजी, किस स्ट्रैटेजी से हमें वर्क करना चाहिए एग्जामिनेशन में. ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट. एज वी ऑलरेडी नो दैट द एग्जामिनेशन विल बी ऑन 26th of April, राइट. सो जितना भी टाइम बचा है, अपने आप सोच लो आप ये सेशन कब देख रहे हो, अकॉर्डिंगली अपना टाइम डिवाइड करना शुरू कर दो, राइट. नाउ इफ आई लुक एट द ओवरऑल पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन, द एग्जाम विल हैव 3 सेक्शंस. 3 सेक्शंस में एग्जाम डिवाइडेड है. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 33 क्वेश्चंस, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग 33 क्वेश्चंस, एंड वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 34 क्वेश्चंस. Now total there will be 100 questions and ये 100 questions हमें 150 minutes में करने हैं. Now one very important thing that you must know about Jipmat is there is no sectional time limit. Sectional time limit नहीं है. जिस तरीके से रोहतक के एग्जामिनेशन में, इंदौर के एग्जामिनेशन में सेक्शनल टाइम लिमिट है, यहाँ पे सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं है. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है हर एक सेक्शन के लिए, नहीं. इसको डिफरेंट वे से समझो. नाउ लेट्स से वन ऑफ द एरियाज इज योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट. लेट्स से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, राइट. सो स्ट्रॉन्ग होने का मतलब क्या है? आप सबसे पहले तो इस एरिया में अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते हो सो दैट आपका ओवरऑल स्कोर मैक्सिमाइज हो जाए, राइट. दूसरी चीज ये है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, सो यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन दैट सेक्शन इन लेस अमाउंट ऑफ टाइम. ठीक है. सो अब ये जो टाइम सेव होगा आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, सेक्शनल टाइम लिमिट की वजह से आप ये जो बचा हुआ टाइम है ये कहीं और यूटिलाइज नहीं कर सकते थे. यहां पे ये अवेलेबल है आपके लिए, ये फैसिलिटी अवेलेबल है, ये बोल सकते हैं. सो लेट्स से क्वांट के 33 क्वेश्चंस आप 40 मिनट्स में कर लेते हो, 40 मिनट्स में, राइट. टोटल हमारे पास 150 मिनट्स है. 150 मिनट्स का मतलब क्या है? 50 मिनट्स हर एक सेक्शन को दे सकते हैं, बट दैट डजंट मीन दैट वी विल बी गिविंग इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम. तो अगर ये स्ट्रॉन्ग एरिया है, 33 क्वेश्चंस आप 40 मिनट्स में टेक केयर कर सकते हो, तो वो जो 10 मिनट्स है एक्स्ट्रा बचते हैं वो किसी और सेक्शन में भी अप्लाई कर सकते हो, right. So this is one advantage that you must take in an examination which does not have a sectional time limit. All right, ठीक है. Now in this session we'll be talking specially about data interpretation and logical reasoning section, how to tackle these 33 questions in less amount of time. ठीक है. मैं ये नहीं बोल रहा कि DI and logical reasoning है तो इसमें 50 मिनट्स लगाओ, 60 मिनट्स लगाओ, नहीं. You must save time wherever you can. So let's understand कि ये जो particular section है इसको tackle कैसे कर सकते हैं, right? Now to tackle this examination, to tackle this section, we should be knowing what actually contained in this section. इस section के like components क्या क्या है. So logical reasoning and data interpretation, it's clear
So you will get questions of logical reasoning as well as data interpretation, right? Now data interpretation की जो weightage है वो less है as compared to logical reasoning. So if I talk about the last year examination, Jipmat 2024, in this exam, out of 33 questions, we saw only 7 questions of data interpretation. Data interpretation के सिर्फ 7 questions आए थे, and they were divided in 3 different sets. Now one set was a tabular data from where 3 questions were there. The other 2 sets were like, one of them was a pie chart and the other was a bar graph, right? So if you look at this particular table, number of questions of data interpretation, they were only 7 out of 33 questions. So that means the remaining 26 questions were from logical reasoning. Now, logical reasoning is also categorized in 2 different parts: verbal reasoning, or that we call as critical reasoning, in which in different examinations आपको syllogisms, statement conclusion, statement assumptions, statement course of action, इस type के questions मिलेंगे. But the weightage of these particular topics is also very less if I talk about Jipmat examination, whatever we have seen in Jipmat 2024, right? So if I look at those type of questions which will require a little bit of verbal skills, so वो वाले questions यहाँ पे limited ही थे. I'll say that 4 to 5 questions were from those areas, right? So you can see logical connectives. There was something in analogies which required a little bit of verbal skills. Okay, so 3-4 questions were from those areas. But the remaining questions, right, I can say around 22 to 23 questions were from quantitative based reasoning, or we can say simple logical reasoning. Now the components of this logical reasoning, जो मैं बोल रहा हूँ simple logical reasoning, right, इसके components क्या क्या है? So starting from coding decoding series, odd one out, direction senses, blood relations, Venn diagrams, cubes and dices, clocks and calendars. You will see every variety of question that was asked in the last year, right? So the students who will ask me कि सर कौन सा वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक लेस इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक को हम अफोर्ड कर सकते हैं कि हम छोड़ के चले जाएं, सो आई वुड से दैट ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो आप छोड़ सकते हो, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जिससे मैं गारंटी कर सकता हूं कि 2025 में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, right? So it totally depends on the psychology of the group of people who make this examination. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उनके ऊपर एक कंस्ट्रेंट है कि हर एक टॉपिक में से एक क्वेश्चन डालना जरूरी है. But we have seen in Jipmat 2024 that at least one question was asked from almost every area. ठीक है, तो अगर हम इस चीज को स्टडी करें, there was one question from blood relations, there was one question from directions, there was one question from distribution, right? So circular arrangements, and one question from distribution, right? ठीक है, then there were 2 questions, one from cubes, cutting and coloring of cubes, and one on dices, the different orientation of dices, which we have covered in the classes, right? Then if I'll come to this side, there were 2 questions from word formation. Word formation as in a word was given, let's say infrastructure. So infrastructure के alphabets को use करके कौन सा word बना सकते हैं? There were 4 options that were given, and we'll have to select one of them. Another was a word was given, and we'll have to find out how many alphabets or how many characters were there in between 2 alphabets that were there in the word. इस type के questions हमें बहुत मिलते हैं, right? So there were 2 questions from that. There was one question from quantitative reasoning which required the usage of simple equations, linear equations. Linear equations आपने quant में किया है, so linear equations का use करके there was one question. Then there was one question each from clocks and calendars. Now clocks and calendars हमें लगता है important topic है, 4 या 5 questions आने चाहिए, but so they have done justice with each and every topic, keeping only one question from clocks and one question from calendars. Then there was a very easy question on Venn diagrams, and one question was there in which you'll have to count the figures, right?
Now rest, if I'll talk about coding and decoding, number and alphabet series, right? It's not only number series, but it's miscellaneous series. So there were 6 questions from that. And from analogies and odd one out, there were 3 to 4 questions that we have seen in the previous year. Now, similar has been the pattern of Jipmat across last few years, right? So, we don't have to do any kind of experiment. हमें कुछ extra करने की जरूरत नहीं है, कुछ special करने की जरूरत नहीं है, कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है. Okay, so the strategy that will work for us, the foolproof strategy that will work for us is to revise each and every topic. So in the classes, we have covered all these topics. I'll not say almost, but we have covered each and every topic in the classes, right? So now what you have to do is, after you have attended the class, after you have practiced all the questions that were covered in the class, after you have solved all the questions which were provided to you in the DPP and your online study material in the form of different tests, now what you have to do is you'll have to start revising each and everything from the beginning. Okay, now in parallel to that, you will have to write tests, the different tests. Jipmat के test series में participate करना start कर दो, and after giving every test, you will have to do a proper analysis of each and every test, and then find out what are your weak areas from that test. Okay, so let's say in today's test, you could complete only 25 questions out of 33. And out of those 25 questions, आपके 5 क्वेश्चन गलत हो गए. ठीक है, तो सबसे पहले पकड़ो उन 5 क्वेश्चंस को जो गलत हो गए हैं. So why you have made a mistake? From which area was that question came from? So let's say आपका जो क्वेश्चन गलत हुआ वो क्लॉक्स में से जो फॉल्टी डिफेक्टिव क्लॉक्स वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, वो यार पल्ले नहीं पड़ रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रहे हैं. ठीक है, so sit on this particular area, clocks, defective clocks, solve at least 10 questions of similar type, and फिर देखो नेक्स्ट टेस्ट में कौन रोक सकता है आपको वो वाला क्वेश्चन सही करने से, right? So this is what we'll have to do, this is what we have to perform over the next 15 days that are left with us. Weak area find out karo, work karo, and that weak area will no longer be your weak area because you have worked on that weak area in the last moments of your preparation, right? So what you should do now is you have the list of topics. आपके पास complete list of topics है. Now every day, I'll not say every morning or every afternoon or every evening, right? Every day you must have a total of 10 to 12 hours of studying time. ठीक है, इतना टाइम निकालना पड़ेगा. इतना टाइम निकाले बिना ना कुछ भी नहीं होगा. सो जो भी आपने लास्ट 15 डेज में, लास्ट 1 मंथ में, लास्ट 6 मंथ्स में जो भी मेहनत की है वो सारी बेकार हो जाएगी अगर लास्ट 10 टू 15 डेज में आप ढीले पड़ गए. ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लास्ट 10 टू 15 डेज में ढीला नहीं पड़ना है. ठीक है, नाउ few things that should come every day, जो आपको हर रोज करनी ही करनी है. So you will have to take out 12 hours of studying time. 12 hours of studying time को 4 parts में divide कर दो, 4 parts में. Now why 4 parts? You will understand this thing. Now we have 3 sections, but still we are dividing it in 4 parts. So 3 sections and then 1 part to write the mock. Mock भी तो लिखना है ना. ठीक है, so 12 hours you can devote 2 hours to logical reasoning, 2 to 3 hours to quantitative ability, 2 to 3 hours on verbal RC, right? So 7-8 hours consume हो चुके हैं, आपके पास 3 to 4 hours बचे हैं. In these 3 to 4 hours you must write a mock almost every day. ऑलमोस्ट एवरी डे 2 घंटे का, 2.5 घंटे का, 3 घंटे का, जितना भी टाइम आप मॉक पे स्पेंड कर रहे हो ये अब करना जरूरी है continuously for the next 10 to 12 days, right? ठीक है, now the 2 hours that you are giving for logical reasoning and data interpretation, what you have to do in these 2 hours, number 1, revise any of 2 or 3 topics. Okay, so let's say today you decided that you will revise blood relations and direction senses. Okay, so blood relations will require 15 to 20 minutes, maximum half an hour to completely revise it. Similarly, direction senses. Now when you are doing revision, you are practicing only those questions which you have bookmarked in the past.
मैंने बताया था आपको बुक मार्क करने जरूरी है, क्वेश्चंस जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको मार्क करो, सो दैट यू कैन रिवाइज दीज क्वेश्चंस at the time of revision. Okay, so spend 20 minutes 25 minutes on each of these areas. Blood relations पे 20-25 minutes, direction senses पे 20-25 minutes, right? So similarly select 2 to 3 areas which you will be revising on daily basis, right? This will consume your 45 minutes to 1 hour, right? Now in the next 1 hour for LRDI, because you have kept 2 hours for LRDI, so in the next 1 hour work on the weak area that you have like that you are able to find out from the revision of the previous day. So let's say आज आपने रात को और evening में एक mock लिखा, you have written a mock paper, and from that mock you are able to find out 2 or 3 weak areas or 2 or 3 questions in which you are lagging behind. ठीक है, तो अब इस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस ये जो 1 आवर मिला है आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करना है, right? So like taking out 2 hours on daily basis for LRDI is not a lot of thing that I'm asking for, and I'm asking the same thing not for myself but for all of you, but for yourself only. ठीक है, so 1 घंटा आपको डिवोट करना है रिवीजन ऑफ एनी 2 or 3 टॉपिक्स, and 1 hour आपको डिवोट करना है on working on the areas which are the weak areas that you have determined from the practice of the previous day, right? Same cycle will keep on repeating for the next 10 days, and I am sure that nobody can stop you from scoring good marks in logical reasoning and data interpretation, right? Now friends, this is all from my side for this day. Now in my next session I'll be covering up how to attempt Jipmat examination, how to divide these 150 minutes in different sessions, in different sections, and how to make sure that you are able to maximize the number of attempts when it comes to solving those 100 questions in that limited amount of time of 150 minutes, right? So friends, thank you very much for this session, and all the very best for your future endeavors. Have a nice time. Bye bye.